ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अगर जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर दोनों तरफ एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कीटोन। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग इसका एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सारे के सारे यहां पर देख लेते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, स्टिल लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट, लोअर एल्डिहाइड्स, the lower aldehydes are pungent smelling liquids. The lower aldehydes are pungent smelling liquids, whereas higher aldehydes are waxy solids। जो हमारे लोअर एल्डिहाइड्स है बेसिकली 7-8 कार्बन के कम अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो तो वो पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, और हायर एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो वैक्सी लिक्विड्स होते हैं। लोअर कीटोन्स are sweet smelling liquids, whereas higher ketones are waxy solids। ओके, दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट increases with the increase in molecular weight and decrease with branching। Boiling and melting point increases with the increase in molecular weight and decrease with branching। तीसरा, boiling point and melting point of aldehydes is greater than that of ketone of similar molecular weight। Boiling point and melting point of aldehydes is greater than that of ketone of similar molecular weight। चौथा, the carbonyls having less than 6 carbon atoms are highly soluble in water। What is the reason of the solubility?
आई थिंक इट इज प्रेटी एविडेंट। यहां पर जो हमारे पास है, अगर R C डबल बॉन्ड O R डैश, और यहां पर है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाले ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है। तो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मिलने वाला है। ठीक है, ओके। सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं और क्या बोल सकता हूं? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ increase in molecular weight। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे हमारा एराइल या अल्काइल पार्ट बढ़ेगा, जो कि हमारा वाटर हीटिंग है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करने वाला है। एंड दूसरा जो मैं और बोल सकता हूं वो ये है, जो solubility of aldehydes is more than ketone of same molecular weight। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो एल्डिहाइड का सॉल्युबिलिटी जो होगा वो कीटोन से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्रोपेनॉल्डिहाइड है, इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारा एसीटोन से ज्यादा होने वाला है। ये हमारा एसीटोन से ज्यादा होने वाला है। ओके, अच्छा, अब दो तीन जनरल नॉलेज वाली बात। 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 54 to 56% वाटर प्लस 4 to 6% ये जो हमारा एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ये वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉल्ड फॉर्मेलिन। ये वाले सॉल्यूशन को हम बोलते जो है वो है फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन का काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट काम है, यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। Used for the preservation of biological samples। Okay, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज शुगर, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज शुगर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को, केमिकल कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉल्ड फॉर्मामिंट।
इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मामिंट, यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, यूज्ड एज मेडिसिन फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द एल्डिहाइड एंड कीटोन है। नाउ वी मूव ऑन टू द केमिकल रिएक्शंस। लेट्स सी।